Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the highest name of Allah, the most gracious and the most merciful. Welcome to the video lectures. This is your English teacher Sahrish Nawaz, class 5, subject English, final term. This is lecture number 12, Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. Let's have a look at the contents of this lecture. First, there will be introduction of the topic, then explanation. After that, there will be some key points. Then we will describe a picture. At the end, there will be a home assignment. Let's start with the introduction. Dear students, put all the necessary stationery items with you, like your pen, pencils, and your notebook. You must be supervised by some elders or some supervisor. Picture composition. Picture composition means to describe the given picture, to make a story out of the picture, and to express and elaborate the picture in your own words. A picture composition, as you have done it already in your class, कि पिक्चर कॉम्पोजिशन कहते हैं पिक्चर डिस्क्राइब करने को, या पिक्चर में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है उससे एक स्टोरी बनाने को, या जो आप फील कर रहे हैं, जो आपने व्यू किया, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट द पिक्चर, उसको एक्सप्रेस करने को पिक्चर कॉम्पोजिशन कहते हैं. एक्सप्लेनेशन. Composition means putting together, arranging, or organizing the detail that you are finding in any given picture. A student is asked in picture composition to describe or elaborate the given picture in his or her own words. Dear students, अब आपने पिक्चर को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है. वट एवर यू सी इन द पिक्चर, उसकी जो सेटिंग है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनको आपने अरेंज करना है या ऑर्गेनाइज करना है अपने वर्ड्स में एंड सिंपल लैंग्वेज में. Here are some of the key points that you should keep in your mind before attempting any picture. First, you should study the picture carefully. Next, study peripheral details, that is facial expressions, postures, clothes, atmosphere, environment, etc. Use simple language and imagination. Use adjectives. Use present tense or describe the picture in present tense or present continuous tense. Write in a proper sequence. Dear students, first look at the picture very carefully. आप पिक्चर को अच्छी तरह से देखें कि उसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं. व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पिक्चर. एंड पेरिफेरल डिटेल्स मीन कि बाकी पिक्चर में इर्द गिर्द क्या दिया हुआ है. वहाँ पे चार्ट्स हैं, कर्टन्स हैं, वहाँ का फर्नीचर, ईच एंड एवरी डिटेल, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, दे आर हैप्पी, दे आर सैड, दे आर इंजॉइंग एट्सेट्रा. और उनकी अपीयरेंसेस, उनके क्लोथ्स कैसे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है. एंड देयर पोस्चर्स, कि वो किस तरह बैठे, दे आर सिटिंग, दे आर लाइंग, और दे आर रनिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर. एंड देन स्टूडेंट्स, आपने सिंपल लैंग्वेज और अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है. एंड ट्राई टू यूज़ एडजेक्टिव्स लाइक गुड, ब्यूटीफुल, कलरफुल, अमेजिंग, वंडरफुल, सच वर्ड्स, बिकॉज इट इन्हेंसेस योर क्रिएटिविटी. देन पिक्चर को आपने डिस्क्राइब करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू डिस्क्राइब द पिक्चर इन प्रेजेंट टेंस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने सीक्वेंस में लिखना है. जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, कंटेंट एंड द पिक्चर मस्ट बी रिलेटेड. एक सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस. हाउ टू राइट picture composition. Dear students, I will briefly tell you that how to take a start, how to describe the picture, and how to conclude the picture composition. So take out your notebooks and note down these key points. First, there will be introduction. Give a brief introduction of the picture. Look at the picture.
What is the setting of the picture? What is the time? How many characters are there? And what are they doing, which is called actions. सबसे पहले आपने place के बारे में बताना है, whether it is a park, it is a classroom, it is a zoo. तो जो भी आपकी setting होगी, place होगी, first you have to describe it, then time. After that, how many characters means people, कितने लोग हैं उसमें, kids हैं, men हैं, women हैं, and then what are they doing, जो भी वो कर रहे हैं आपने उन actions को भी describe करना है. Next comes body or context. The ideas and thoughts that the students receive from the picture should be mentioned in a correct and meaningful sequence. यानी जो भी आपने grasp किया एक पिक्चर को देख के, जो भी आपकी व्यू पॉइंट्स हैं, दे शुड बी करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए और उनमें एक सीक्वेंस होना चाहिए. लाइक फर्स्ट देयर शुड बी इंट्रोडक्शन एंड देन बॉडी ऑफ द पिक्चर एंड एट द एंड देयर शुड बी कंक्लूजन. ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है. एट द एंड कम्स कंक्लूजन. ब्रिंग द पिक्चर टू एन एंड विद राउंडिंग ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स. जो कुछ भी आपने पिक्चर में डिस्क्राइब किया एट द एंड यू हैव टू पुट एन एंड बाय राउंडिंग ऑफ द सेंटेंसेस. लाइक this is an amazing picture, it is a wonderful picture, this is an interesting picture. These are concluding remarks about any picture. Dear students, here is a sample picture for you. Look at the picture carefully and bring in your mind all the key points that we have discussed earlier. I have given you a list of keywords. Look at them, and with the help of these keywords we will describe a picture. And the keywords are birthday celebration, beautifully decorated room, colorful balloons, delicious food, colorful clothes, happy and dancing, enjoying. Now students, we will describe the same picture. As I have already given you the keywords, I encourage you to use your own words. This is just for your help, for your guidance. You have to describe any picture in your own words, following the key points that you have in your mind. And one thing more students, this picture is not included in your exams. This is just for your guidance and for your help. Let's come to the picture description. This is the picture of a birthday celebration. We see a room beautifully decorated with colorful balloons. The blue curtain in the background looks amazing. The tables are full with delicious food like cake, ice cream, chips, and sweets. The kids are dancing on music. Their beautiful clothes and birthday caps make the picture more interesting. The women are serving them happily. They all are having fun and merrymaking. This is a wonderful picture. Now students, look that the complete picture is described in present tense or present continuous tense. This is one of the easiest way to describe any picture. Students, this is your home assignment. Look at this picture carefully. Note down all the main points. Make a word web. Look at the setting, the characters, and the actions of this picture. Write down the key points and then write a paragraph about this picture. You have to describe the picture in the form of paragraph. Don't write in the form of sentences. Describe the given picture in your own words. Dear students, this is your home assignment. This is not included in your exams. I am again telling you, this is just for your practice. I hope students you have understood it very well. Thank you so much and Allah Hafiz.